Good evening, students. Today we are going to start that is chapter Introduction to the Computer System, Unit 1, Informatics Practices, and this is useful for the computer science students as well as tables of contents, Introduction to Computers and Computing. And these are the topics, so jump on that. Introduction to a Computer and Computing. As you know, what is a computer? A computer is an electronic machine that can take data, process it, store it, and gives result output. So computer क्या है? Electronic machine है. Electronic machine है. It is not an electric machine. Electric machine is basically designed for a one task, like kettle. You can just use for hot water and get the hot water from the kettle. But electronics means where you can process your data. It can process, it can store, and it can think. So computer is an electronic machine. The word computer comes from the Latin word computere, means to calculate. Okay. And the next one is, what is computing? So what is computing? Do any task. टुडे जैसा कि आपको दिख रहा है स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, ऑफिसेस, एवरीवेयर वी आर गोइंग टू यूज कंप्यूटर टू कंप्यूट and get informations and produce the results. Now we move to the topic that is characteristics of a computer. आपको पता ही है characteristics है speed, accuracy, storage, automation, versatile, no fatigue. So these are the characteristics of a computer. As you know already, you are in and this is the simple exercise and activity. If you want to attempt, you can do it these think and write your answers. Now the next important topic is evolution of computing devices. So as the first generation of computer, we start with the first generation of computer, 9040, 9050. This is the first generation of computer, and the most important part, vacuum tubes. अब वैक्यूम ट्यूब्स क्या थे? लार्ज लार्ज इन साइज, बहुत बड़े होते थे जो आपके वैक्यूम ट्यूब्स हैं, एंड वेरी बिग, filled entire rooms, expensive, generated a lot of heat. बहुत बड़े होते थे इन साइज, और क्या हीट बहुत जनरेट करते थे ये. दे कैन बेसिकली यूज्ड मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज मीन्स है यहाँ पे 0 and 1. 0 1 की फॉर्म में इसमें कोडिंग होती थी. दैट इज इन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. इसका एग्जांपल, इफ यू कैन टेक द एग्जांपल, सो इन ENIAC, this is the first generation of computer. इसका full form, what is the full form of this? Electronic Numerical Integrated Computer. So this is the full form of ENIAC. And do you know it approx 18,000 of vacuum tubes इसमें यूज हुई थी. 1800 स्क्वायर फीट जो था, इतना इसका स्पेस चाहिए होता था. एंड द थिंग इज दैट यू, जैसे आजकल मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, इसमें मैनुअली यू नीड टू डू द प्रोग्रामिंग, यू नीड टू चेंज वायर, मैनुअली यू डू द प्रोग्रामिंग. सो यू कैन मैनुअली, आपको करना पड़ता है इस वाले में. नए कंप्यूटर्स में फ्लिपिंग स्विच एंड केबल्स दे कैन एक्सचेंज, देन मैनुअली वी कैन डू. एंड द पर्पस, इसका मेन पर्पस जो था वाइस द इन कंप्यूटर का, दैट इज कैलकुलेट आर्टिलरी firing tables for US Army. This is the basic, this is the purpose to invent that in a computer. The second generation of computer, 1950 to 1960, used transistor, and after using transistor, that replaced vacuum tubes, and the computers becomes smaller, faster, cheaper, and less heat. But they can use the assembly language. It is very tough to use that binary language 0 and 1, so they can invented this assembly language, use the mnemonics words like add, sub, to reduce this 0 1 process. And now you know computer understand only 0 and 1, so they have a utility program, that is assembler. इसका वर्क होता था, जो आपका ये असेंबली लैंग्वेज है इसको कन्वर्ट करना to binary language. So assembler basically used to convert that assembly language program to the binary language for understanding to the computer. Okay, then move to the third generation, 1960 97. IC, integrated circuits had used over there. Many transistor placed on a small chip, and in a small chip, and then that create IC. Okay, I'm going to show you the video of these all the main generation parts, and these are even faster, and they can use high level language, like
and the basic programming language has used in third generation of computers. High level language means which has basically we can which human understandable. It's not more depending on machinery language, so they can invented high level language using English like of language. The word the basic beginners all purpose symbolic instructions code. This is a full form of basic language that Mount College has invented in 1964 for the students to understand the language. And the computer which has used in that generation is IBM 360 सीरीज. ये वाला नाम का कंप्यूटर यूज होता है, बहुत सक्सेसफुल रहा ये कंप्यूटर अपनी कंपैटिबिलिटी के लिए. इसमें आपको क्या कहते हैं कंप्लीट रेंज ऑफ एप्लीकेशन आपको मिल जाती थी, स्मॉल से लेके लार्ज. तो बहुत चला है, बहुत ही. दिस इज वन ऑफ द सक्सेसफुल कंप्यूटर इन द फोर्थ जनरेशन 1970 टू प्रेजेंट. अब इस जनरेशन में यू आर यूजिंग लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स, पर्सनल पीसीज, है ना. इस वाली जनरेशन से माइक्रो प्रोसेसर्स यूज होने लगे. दोज आर मोर फास्टर देन आईसी and they can using less electricity. And the examples is Intel 400, modern laptops, smartphones. These all come under this fourth generation of computer. तो इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से तो आप फेमिलियर हुई, यू आर यूजिंग ऑन योर ऑन डेली टास्क. द फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. फिफ्थ जनरेशन जो जिसपे वी आर वर्किंग ऑन दिस एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर दैट कैन थिंक एंड लर्न. कंप्यूटर प्रोड्यूस द रिजल्ट्स, यूज एआई, मशीन लर्निंग. अभी जो सिंपल से आपके एग्जांपल्स हैं लाइक वॉइस असिस्टेंट्स, एलेक्सा, सिरी, सेल्फ ड्राइविंग कार्स. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एआई. Much more will come in future. Check out these AI videos on the evolution of computers. Thanks for watching. Have a great day. Like, share, subscribe. Hit the bell now.